Good morning, students. I hope you all are well and doing mathematics comfortably. These days, we people are doing ring. Voila. We have defined so many terms, but today we will write their formal definitions. Okay, so let us see. A triple is known as ring if is an abelian group. Second is a semi-group, and third multiplication is distributive over addition. Several times I have written this. बहुत बार लिखा है मैंने इसको. A triple R is non-empty set. R is a non-empty set together with two binary compositions denoted by plus and dot. Forms a ring or is known as ring if with respect to plus it forms an abelian group. That means five properties. Closure, generally we consider closure property that is related to binary composition. Sometimes we write, sometimes not, but generally we write closure, associativity, identity, inverse and commutative. So this is abelian group. Second one is a semi-group, means closure property and associativity, only these two. And multiplication is distributive over addition, left distributive and right distributive. I have already explained. So this triple is a ring if these three are satisfied. गुंजाइश जो है वो केवल इस सेकंड के लिए है और इसी के अकॉर्डिंग हमने बहुत सारे टर्म्स जो थी वो हमने डिफाइन की थी. एक एक करके इसको डिफाइन करूंगा, देखते हैं. नंबर वन, commutatively. R is commutative ring if for all A, B belongs to R implies AB equals B. Commutative property holds. इसी में तो गुंजाइश है और तो किसी में है. ये कंप्लीट है, ये कंप्लीट है. So if multiplication is commutative, then the whole ring is known as commutative ring. So commutative ring means this is commutative ring if for all A comma B belongs to R implies AB equals to B. Remember, the sign between A and B is the second composition, that means here multiplication. Number two, ring with unity. Unity means identity element. Remember, ring with unity. Unity means identity element. Second में ही गुंजाइश है. So I write a ring is known as a ring with unity
if for all A belongs to R, there exists A belongs to R such that EA equals to A equals to AE। आइडेंटिटी की डेफिनेशन जो आपने ग्रुप में पढ़ रखी है उसी को मैंने लिखा है, कोई नई बात नहीं की है। Is known as a ring with unity if for all A belongs to R there exists A belongs to R such that EA equals A equals to AE। Generally unity or identity element, unity is denoted by 1। किससे डिनोट किया मैंने? 1 से। सो हियर इट इज, दैट मीन्स 1। सो ring with unity, how to define? Ring with unity means a ring is known as a ring with unity if identity elements exist with respect to multiplicative inverse. That means it is multiplicative identity, and we have considered several examples of this one. कम्यूटेटिव हो गया, आइडेंटिटी हो गया। अब नंबर 3, a ring R is known as without zero divisors. A ring is known as without zero divisors if AB equals 0 implies A equals 0 or B equals 0। बचपन से करते हुए आ रहे हैं। So a ring is known as without zero divisors, जीरो के शून्य के भाजक नहीं है। If the product of two numbers is 0 implies either A equals to 0 or B equals to 0। ये हमने बहुत बार किया है, मैं एग्जांपल भी देता हूँ। पिछले वाले वीडियो में मैंने एग्जांपल दिया था 4 here and x minus 2 x minus 3 equals to 0। अब यहाँ से product of 2 is 0, therefore either x minus 2 is 0, x minus 3 is 0, so x equals to 2 or x equals to 3। यहां से यहां तब आया जब मुझे ये मालूम है if product of two numbers is 0 then either A equals to 0 or B equals to 0। But yesterday we have seen if A is not equals to 0, B is not equals to 0। So if we multiply them in numbers, particularly numbers means set of natural numbers or set of integers or set of whole numbers or real numbers or complex numbers, so if two non-zero numbers, if they multiply means AB, then it is never equal to 0। But yesterday, if you remember, I took the example in such a way that this is not 0, this is not 0, even then AB equals to 0। A is not 0, B is not 0, even then their product, their multiplication is 0। And remember, it happens in, you see,
multiplication, that means it is Z6. Remember 0, 1, 2, 3, 4, 5. Consider one element 3, other element 4. 3 is not equals to 0, 4 is not equals to 0. But if I multiply them, 4 3s are 12, but it is multiplication modulo 6, then the answer is 0. We have seen this. So in this set, here I have written R is a non-empty set. So here Z6, this is non-empty. How many elements? 1, 2, 3, 4, 5, 6. And remember, this is a ring under this. This is a ring. Numbers obey the commutative law. I have already explained. So this is commutative ring. This is a ring with unity. 1 is the unity here. If we operate this one. But here it is not applied. Yesterday it was explained. This is a specific property. This is called a ring with 0 divisors. Here it is ring without 0 divisors, and here it is a ring with 0 divisors. Okay, so fourth I write a ring is known as, जानी जाती है, is known as with 0 divisors if A is not equals to 0, B is not equals to 0, implies AB equals to 0. And here is the example. So a ring without 0 divisors and a ring with 0 divisors. So be careful. Commutative ring, ring with unity, ring without 0 divisors, and ring with 0 divisors. Okay? Now again I consider the second one, and we include something, or integral domain. हिंदी में इसको बोलते हैं पूर्णांकीय काम. Definitions are very important, and you just remember by recalling the basic things. Okay, so integral domain, a ring R is known as an integral domain if number 1 R is commutative. R is commutative ring. Second, R is with unity. R is commutative ring, R is with unity. And number third, R is without 0 divisors. Integral domain. A ring is known as an integral domain if R is commutative ring, R is with unity, R is without 0 divisors. ध्यान रखना, dot is means multiplication is commutative.
मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट। इसको ग्रुप बनने के लिए केवल इसमें एक और प्रॉपर्टी चाहिए, दैट मीन्स एवरी नॉन जीरो एलिमेंट इज इनवर्टिबल, देन इट विल बी ग्रुप। कल मैंने बताया था उसके लिए, उसको बोलते हैं फील्ड। तो ये फील्ड नहीं बना है, मैंने इसमें इनवर्स की बात नहीं बोली है। थर्ड प्रॉपर्टी डिफरेंट है। R is without zero divisors, means if AB equals to 0, AB equals to 0 implies A equals to 0 or B equals to 0. For A comma B belongs to R, AB equals to 0 implies either A equals to 0, B equals to 0, जो हम बचपन से करते हुए आ रहे हैं। So commutative ring with unity and without zero divisors is known as integral domain. The example, best example for this one is Z. Set of integers. If product of two integers is 0, then 100% one of them must be 0. 1 is the multiplicative identity and numbers follow the commutative law. So Z comma plus dot, this is the integral domain. Remember, again I am saying non-zero element is not invertible here. Suppose I consider number 2, then 2 inverse does not exist. 1 by 2 is not the integer. आपको याद होना चाहिए, इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। लेकिन कौन सा इनवर्स? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। मैं यहां पर इसकी बात नहीं कर रहा हूं, आई एम जस्ट राइटिंग this basic definition. If product of two numbers is 0, then one of them must be 0. So this is known as integral domain. Similarly, Q plus, this is integral domain. Set of real numbers, integral domain. Set of complex numbers, integral domain. Yes, integral domain, integral domain, integral domain. A set of matrices of order 2 by 2, that is not integral domain because it is not commutative. Matrix multiplication is not commutative. Be careful. लेकिन हम उस सेट को छोड़ेंगे नहीं, हम उसको भी पकड़ के रखेंगे। उसके लिए हम एक नई डेफिनेशन को डेवलप करते हैं, देखते क्या है उसके अंदर। ओके, सो आई राइट इट हियर। डिवीजन रिंग और इसकी फील्ड। डिवीजन रिंग और इसकी फील्ड। फील्ड पूरा नहीं है, फील्ड पूरा नहीं है, इसका मतलब कुछ और है यहां पर। क्या लिखूं मैं डिवीजन रिंग के लिए? ring a ring is known as division ring or skew field if R is number 1.
किसमें गुंजाइश है? सेकेंड वाले में। इफ आर इज a ring is known as division ring or skew field if this forms a group. सेकेंड में तो गुंजाइश थी। इस कंपोजिशन के लिए ग्रुप बना रहा है। ध्यान रखना, मैंने अबेलियन ग्रुप नहीं लिखा है, मैंने केवल ग्रुप लिखा है। मीन्स दिस वन dot forms a group, means identity exists and every non-zero element is invertible, means multiplicative inverse. Division ring or skew field, a ring is known as division ring or skew field if this forms a group. बात खत्म। This is a ring, means for this one abelian group, distributive property. Now I'm talking about this one. इसको मैंने ग्रुप के लिए कंप्लीट कर लिया है। रिमेंबर आई हैव रिटन ग्रुप, नॉट abelian ग्रुप। केवल एक ही प्रॉपर्टी तो मुझे लिखनी है, abelian की। If it is an abelian group, then it is a field. Then it is a field. So what is a field? A ring is known as a field if this forms an abelian group. That's all. Every non-zero element, again I am telling you, मैं बार बार इस बात को रिपीट करता हूं, every non-zero element has multiplicative inverse. So what is a field? Field is a special type of ring in which the multiplicative composition forms an abelian group. Okay, so it is that. कई बार जो है डेफिनेशन में आपको पूछा जाता है, सो बी केयरफुल। डिवीजन रिंग इज नथिंग, इट इज स्क्यू फील्ड। ring forms a field if abelian group. That means number one, multiplication is
distributive over addition means लेफ्ट में लिखा, so this is left distributive and this is right distributive, right side. कई राइटर्स इसको b plus c times a भी लिखते हैं, no mistake, both are correct. So a ring forms a field if this forms an abelian group. That means ये रिंग तो है ही, मीन्स ये इसके लिए अबेलियन ग्रुप होगा और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होगी, ये दोनों तो साथ चलेगी। रिंग है इसलिए इसके लिए सेमी ग्रुप बनेगा, मैंने और इसमें इंक्लूड कर लिया है, इसको कम्यूटेटिव बना दिया, इनवर्स डाल दिए, इनवर्स तभी डलेगा जब आइडेंटिटी होगी, देन इट इज अ फील्ड। इसके फील्ड केवल इसमें से एक प्रॉपर्टी हटानी है। मल्टीप्लिकेशन के लिए मैंने केवल इसको ग्रुप लिखा है, अबेलियन ग्रुप नहीं लिखा है। यदि मैं इसको अबेलियन ठोक दूं तो ये फील्ड बन जाएगा। सो यू रिमेंबर व्हाट इज अ कम्यूटेटिव रिंग? रिंग विद यूनिटी, रिंग विदाउट जीरो डिवाइसेस, रिंग विद जीरो डिवाइसेस, डिवीजन रिंग और स्क्यू फील्ड, or simply a field and integral domain. You remember all the things, okay? मसाला डालते जाओ, इंग्रेडिएंट्स डालते जाओ, नट्स डालते जाओ, मिठाइयाँ बनाते जाओ और अलग अलग नाम उनके देते जाओ, okay? So now we consider some properties and theorems. Theorems in abstract algebra are very important. So you go through the book now, बुक को पढ़िए, अब देखिए और थ्योरम को कैसे प्रूव करना है वो आपको खुद को देखना पड़ेगा। जितनी भी डेफिनेशन है, जितने भी कॉन्सेप्ट है, आप उनको रिवाइज करो, बुक से थ्योरम उठाओ, उनको समझो, अपने हाथ से लिखो उनको बार बार और प्रैक्टिस करो। A ring R is without zero divisors if and only if and only if the cancellation law holds in R. A ring R is without zero divisors. A ring R is without zero divisors if and only if the cancellation law holds in R. Both way. If cancellation law holds in R, that means the ring is zero divisors, without zero divisors. And if a ring is without zero divisors, then cancellation law holds. But first, what is cancellation law? What is cancellation law? हमने खूब कैंसिल किए टर्म्स को, सिंप्लीफाई करते खट खट बिना सोचे समझे, देखते नहीं है इसमें क्या है, तो कैंसिल होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि जब हम बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व करते हैं किसी चीज को, तो उसके पीछे जो है बहुत बड़ी थियरी होती है। ऐसे कॉन्सेप्ट नहीं बनते हैं, ऐसे लॉ जो है वो नहीं बनता है।
if A is not equals to 0 and AB equals AC, then B equals C. This is the cancellation law. आप A और A को कट करते हो, लेकिन कट तभी करना है जब ये रूल अप्लाई होता है. A is not equals to 0, then B equals to C. हमने खूब कैंसिल किया, देखते नहीं है, इसको और इसको कैंसिल करते, B equals to C ठोक दिया. लेफ्ट साइड से कैंसिल कर रहे हो, इस लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ. एंड इफ A is not equals to 0, BA equals to CA implies B equals to C. Right cancellation law. Remember here the operation is multiplication. So if we have this type of situation, then this is called left cancellation law and this is called right cancellation law. तो cancellation law जो है आपको याद होना चाहिए. R is a ring, so definitely there are two operations. This is an abelian group, means it is a group, additive group. कैंसिलेशन लॉ होल्ड्स, लेकिन प्लस के लिए कैसे? A plus B equals A plus C implies B equals to C. ये एडिशन के लिए है, ये भी कैंसिलेशन लॉ कहलाता है, लेकिन एडिशन के लिए, क्योंकि ग्रुप है, ये ग्रुप नहीं है, सेमी ग्रुप है, क्योंकि रिंग है इसलिए सेमी ग्रुप है. मैं इसमें नहीं कह सकता कि होगा कि नहीं होगा, आई डोंट नो, लेकिन इसमें एडिटिव के लिए कैंसिलेशन लॉ होल्ड है, क्योंकि ये इसके लिए ग्रुप है और अपने ग्रुप थ्योरम में पढ़ा है. थ्योरम ये कह रही है कि रिंग R इज विदाउट जीरो डिवाइजर्स, देन कैंसिलेशन लॉ होल्ड्स. सिंगुलर कैंसिलेशन लॉ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, do and does. Continue. The cancellation law holds in R. Means we have this type of situation. We have to prove this. But before this, R is a ring. For all A belongs to R, R is a ring. For all A belongs to R, prove this. How to prove? देखने में बहुत सिंपल लगता है. इसमें क्या है, किसी नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई करते तो जीरो ही आता है. जितना दिखता है सिंपल, उतना ही इसके पीछे बहुत बड़ी थ्योरी है, ऐसे नहीं आता है. हाउ टू प्रूव? लेट B belongs to R, therefore B equals B plus 0. कैसे लिख दिया मैं? R is a ring, so it is group, additive group. So this is the identity element, additive identity element. So I can write this. Okay, then कंपोज किया है, किस साइड से बना? लेफ्ट साइड से. ध्यान रखना, here composition is multiplication because R is a ring, so multiplication composition, गुणन संक्रिया इसमें लागू होती है. मैंने लिख दिया है AB. किसका एलिमेंट है? R का एलिमेंट होगा. R is a ring, so now you can apply distributive law, AB plus AC.
And this I write just according to this. This is the element of R. So this I write AB plus 0. 0 is the additive identity. Here it is distributive law. डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ नहीं होगा तो मैं इसको ओपन नहीं करूंगा, ये खुलेगा नहीं ब्रैकेट। बहुत सारे ब्रैकेट खोले मैथमेटिक्स करते समय, लेकिन ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होगी तभी ओपन होगा, नहीं तो नहीं होगा। हमने पहले नहीं पढ़ा था और पढ़ते भी थे तो पता नहीं, बट हियर इट इज। Okay, then look at this is a group, so cancellation law holds with respect to plus. Look at this one. Just compare this. This implies similarly, you can prove by writing A this side, right side, then you solve it. Sometimes this property is asked in the examination. Prove that is. Okay, so we will use this property proving this particular theorem. So let us see. First part. What is given? R is without zero divisors. R is without divisors means for A comma B belongs to R, AB equals to 0 implies A0 or B0. R is without zero divisors, so this property holds. To prove, क्या सिद्ध करना? Ring R is with the divisors if cancellation law holds. Cancellation law holds in R. That means here. थ्योरम का पहले आप उसको पढ़ो ढंग से, उसमें क्या गिवन है, क्या अप्लाई करना है, वो आपको आना चाहिए। याद तो आप करते ही हो, रटते भी हो, लेकिन समझकर, यदि समझकर काम करोगे, 2-3 बार आप उसको लिखोगे तो ऑटोमेटिकली दिमाग में बैठेगा। मैंने आपको पहले कहा था, मैथमेटिक्स requires a lot of practice and practice and practice and practice. There is no shortcut. So, given R is without zero divisors, to prove cancellation law holds in R. This is to prove, okay? And this part is given to us. Any one of them I will consider. So I consider this one. ये लेके चलूंगा मैं और ये शो करूंगा इसकी हेल्प से। ओके, सो
let A, B, C belongs to R. R means ring, not real numbers. Such that A is not equals to 0, AB equals AC. ABC belongs to R such that A is not equals to 0, AB equals to BC. If I prove this is B equals to C, then cancellation law holds, otherwise not. Now, AB equals AC implies अब ट्रांसपोज कर लो इसको, करते आए हैं, काट दो इसको, काटते आए हैं, नहीं, इसे आपको यहां से हटाना है। कैसे हटाओगे? रब कर ध्यान रखना है, A is the member of R, B is the member of R, so AB means composition, multiplication, composition. So AB is also the member of R, AC is also the member of R. AB is member of this, AC is member of this, and you remember R plus is a group, so additive inverse exists. AC belongs to R, therefore minus AC belongs to R, since is an abelian group. Okay, so I write it as वैसे मुझे ऐसे लिखना था, एक स्टेप और, x माइनस x और उसका एडिटिव इनवर्स माइनस x, देन द आंसर इज द आइडेंटिटी एलिमेंट. ओके, सो इट इज दिस. AB minus AC equals to 0. Then I write, ध्यान रखना, मैंने इसके लिए रीजन लिखा है. अब क्या किया है? आपको दिख रहा होगा कि मैंने कॉमन लिया है. नहीं, कॉमन नहीं लिया है. कौन सी प्रॉपर्टी? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. क्यों? क्योंकि R रिंग है तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड होगी. A माइनस AC, ये इसी के इक्वल है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है इसलिए लिखा है. अब आ जाओ, इसको देखिए ध्यान से. सच दैट since A is not equals to 0, since A is not equals to 0, and since A is not equals to 0 and R is without 0 divisors, since A is not equals to 0 and R is without 0 divisors, what do you mean? Product of two numbers is 0, then at least one of them must be 0. यहाँ A 0 के इक्वल नहीं है, यहाँ देखिए A is not equals to 0, so 100% B minus C is equals to 0 होगा, क्योंकि R is without 0 divisors है. यदि विद 0 डिवाइसेस होता तो ये 0 के इक्वल नहीं होता, बट इट इज विदाउट 0 डिवाइसेस, सो दिस इंप्लाइज
B minus C equals to 0. Then this implies B equals to C. कैसे? दोनों तरफ C को मैंने ऐड किया है एडिटिव के लिए, अब आप इसे डायरेक्ट लिख सकते हो. So B equals to C. So first part is proved. You can say this way. I repeat this. What is given? R is without zero divisors. Means AB is 0, then A equals to 0 or B equals to 0. Cancellation law holds. ये cancellation law है जो मैंने लिख दिया है. यहाँ से स्टार्ट किया, लॉजिक लिखता गया और मैं काम करता गया. So it is this type of situation. First part is proved. Now second, the reverse converse part. Cancellation law holds and we prove this one. Okay, so that is it. Similarly, you can prove right cancellation law by multiplying A that side. So similarly, you can write this. Second part. Given cancellation law holds in R. Okay. To prove R is without zero divisors. So cancellation law holds in R. To prove R is without zero divisors. R is without zero divisors. Let A belongs to R and A is not. Suppose AB equals to this. A belongs to R, A is not equals to 0. Suppose AB is 0, since A is not equals to 0, so I have to prove B equals to 0. If product of two numbers is 0, then at least one of them must be 0. Since A is not equals to 0, so I have to prove B equals to 0. तभी तो मैं कहूँगा R is without zero divisors. दो का प्रोडक्ट 0 होगा जब उनमें से कम एक 0 होना चाहिए. A को मैंने मान लिया कि वो 0 नहीं है, तो मुझे प्रूव करना पड़ेगा कि B 0 होगा. अब कैसे करेंगे ना? AB equals 0 implies आपको याद होना चाहिए, थोड़ी देर पहले ही मैंने प्रूव किया था, उसका कारण यही था. थोड़ी देर पहले रिकॉल. This implies this can be written this one. Now use the cancellation law because it is given cancellation law holds. So left cancellation law holds here because A is not equals to 0, so I can cancel it out. This implies B equals to 0. Cancellation law holds in R. यदि कैंसिलेशन लॉ होल्ड नहीं होता तो मैं इसको नहीं काट पाता. ये नहीं कटते, और ये तभी कटेगा जब A नॉट इक्वल टू 0 है. हमने लिखा कैंसिलेशन लॉ के अंदर. So cancellation law holds, so I can write this one. Therefore, AB equals to 0 implies B equals to 0. Therefore, R is without 0 divisors. So this is the way to prove the theorem.
कॉन्सेप्ट को रिकॉल करो, पढ़ो, उसको लिखो और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप लिखते जाओ, रीजनिंग करते जाओ. You will enjoy the mathematics. Okay, so thank you very much. Jai Hind.